Okay. Put your hands on your heart. Be aware of your breath. Be aware of your peace within the heart. Be aware of your crown chakra. Be aware of yourself as the soul, 12 inches above your head. Be aware of the higher soul. Be aware of the presence of God around us. And slowly raise your hand high above your crown to the Supreme God, to the Divine Father, Divine Mother. We humbly invoke your divine blessings for divine light, divine love, divine mercy, inner healing, physical healing, for divine guidance, divine health, divine protection, for illumination, for abundance and prosperity. Thank you for the inner strength to continue with my spiritual practice. Thank you for greater enlightenment, intuition, greater awareness of the subject, greater understanding. We thank you in full faith. Slowly move your hands slightly lower to Lord Bodhisattva Meiling, to all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, to my higher soul, and to Master Chokok Sui. Thank you for your priceless blessings. Thank you. With gratitude, with respect, with love on your heart, we thank you in full faith. Be still, be aware. Silently repeat after me, I am not the body. The body is the vehicle of the soul. I am not the emotions. I am not the thoughts. I am not the mind. The mind is only a subtle instrument of the soul. I am the soul. I am a spiritual being of divine intelligence, divine love, and divine power. I am connected and one with my higher soul. I am connected and one with my divine spark. I am a child of God. I am connected to God. I am one with God. I am one with all. This is the truth, regardless of the capacity of the brain to experience the truth. I am that I am. Be still and be aware.
All right, slowly open your eyes. Just wanted to check. Can you all, Padma ji, Rushali ji, and Hari sir, can you keep the video on? Also, can you tell me if आपको बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा है ना? मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है? My voice is clear? बैकग्राउंड नॉइजेस नहीं आ रहा है ना? There's no background noise, right? Okay, good, good, good. So we have waited enough for the rest. Maybe they will join a little later. So we'll just start with the introduction. So ये session जो है, is Hindi English okay with everyone, or is English is okay, or you need Hindi and English? Rushali ji, English चलेगा? No problem. No problem? Okay. I will speak slowly so that if you have any difficulty तो आप question raise कर सकते हैं. Okay? All right. Now, जो subject है subconscious mind या ये victory or oneself, ये जो subject लिया है या nurturing का, why is it important and why we have kept it, उस पे पहले बात करते हैं. So we have all been in the path of Arahatic yoga from some time, right? And जब हम Arahatic के path पे भी journey, so आपने notice किया होगा कि कई बार जब आप अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, you try to live by the virtues, a lot of time you experience difficulties, right? A lot of time you experience challenges. आपकी पर्सनालिटी आपको कॉन्ट्रोडिक्ट करती है. कई बार अंदर से आपको एक ऐसी इनर वॉइस आती है या एक्सक्यूजेस आते हैं कि लेट्स नॉट प्रैक्टिस दिस नाउ, लेट्स डू इट लेटर ऑन. एक अंदर से प्रोक्रास्टिनेटिंग टेंडेंसीज होती है. देन यू sometimes experience that your body does not support you. Sometimes the emotion does not support you when you want to meditate, when you want to purify, when you want to do service or healing. Even though as a soul, you know this, that all this will lead you to a better life, right? But still, a part of you resists this process. A part of you do not want to follow the 5 pillars of Arahatic yoga, even though it will lead you to soul realization and ultimately your liberation. So this question has been there in my mind, and मैंने इसके बहुत सारे आंसर्स ढूंढने की कोशिश किया. I mean, I kept reading from one book to another, which Master Chokoksui recommended. But one particular author, was able to give a lot of insight into this subject. His name is Torkom Sarai Daryan. He is also an Arhat. He was an Arhat. He was like Master Chokoksui and saint. And he developed his own spiritual school, wrote several books on spirituality, and he gave a lot different or newer insights, you can say, on the subject of soul क्या है and हमारी bodies के ऊपर. Very he was actually a student of theosophy first. थोड़ा सा background में देना चाहता हूँ. So he was a teacher in theosophical literature. Later on उन्होंने उनके गुरु के help से या blessing से उनका खुद का school establish किया, and then based on his own learnings या उनके instructions जो उनको receive हुए, so he started to write his own books and then taking lectures, courses, and finally he established his own school. So this teacher has given a lot of insights, like a lot of depth on the subject. उनकी अगर आप कोई भी book देखेंगे, तो it is like really, really thick किसी भी subject के ऊपर में. तो it's like very vast amount of information जिससे आपको काफी सारी help मिलती है to understand कि why these problems are there. By the way, the internet connection is okay? Is it, मतलब मेरा वीडियो हैंग तो नहीं हो रहा है ना? It's fine? Okay. If the video hangs. आवाज ब्रेक हो रही है सर बीच बीच में. Okay, just give me a minute. I will start a connection from my another network. Just give me few seconds.
So this teacher, I started reading his books many years ago, and whenever I been to ashram, Master Chokoks's ashram, वहां पे they have a lot of books of this teacher. Actually वो books उनकी जो है इंडिया में जल्दी मिलती नहीं है. So whenever I had the good luck to be in ashram, I would read and take notes from different books. So this session is a compilation from the notes taken from his books, plus my own personal insights from the teachings of Arahatic Yoga. और Arahatic में जो भी मास्टर ने purifications दिए हैं, plus some information from the Pranic psychotherapy class, जो हमें help करेगा to first understand कि what are the real causes जिससे हमारे लाइफ में टाइम टू टाइम साइक्लिकली हम लोग ब्लॉक हो जाते हैं या स्ट्रक हो जाते हैं, एंड वी लूज मोटिवेशन टू कंटिन्यू हमारा स्पिरिचुअल पाथ या सर्विस बोलिए या जो भी हम करें. इट इज नॉट जस्ट कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल पाथ और सर्विस. लाइफ में जब भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, यू विल नोटिस दैट यू विल हैव अ लॉट ऑफ challenges or obstacles. Have you not noticed? When you want to do something kind, helpful, good, आप कुछ भी, तो कई बार खुद से अंदर से वो ऑब्स्टिकल आता है. समटाइम इट कम्स फ्रॉम द पीपल आउटसाइड. सो यू वंडर, ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखेंगे कि जब आप किसी सेल्फिश या मलिस इंटेंशन से, गलत इंटेंशन से कुछ करने की कोशिश करेंगे, लोगों को धोखा देने की कोशिश करेंगे या चीट करने की कोशिश करेंगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फेवरेबल सिचुएशंस. You'll find it's much easy to do it. Have you not noticed this? कई बार झूठ बोलना बड़ा आसान होता है, लोग मान भी लेते हैं, काम बन भी जाते हैं. But sometime in order to get the thing done, जब आप सच बोल के काम करते हैं, you notice it is very difficult to get things done. I'm not saying that when you follow the virtues, things do not work out. Sorry, I think I have not muted the participants. Okay. So you may have observed that जब आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कई बार चीजें होती भी है, बट इट्स नॉट एज इजी एज व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग फॉर सेल्फ इंटरेस्ट या कोई ऐसी चीज जो मतलब जिससे किसी का नुकसान हो सकता है. सो दिस हैज बीन अ पैटर्न इन दिस वर्ल्ड that it's easy to do evil, but it's difficult to do good or manifest good. So there's this question that why is this happening? ऐसा क्यों होता है? एक तो ये क्वेश्चन है, राइट. दूसरा, as I told you कि as Arahatic yogis, our first priority is to understand what obstructs us from doing consistent service, consistent spiritual practice. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेजीनेस ही उसका एक आंसर है. कई बार हमको लगता है मैं तो सो लेजी, बट यू नो लाइक एट सर्टेन पॉइंट्स आपने नोटिस किया होगा लाइफ में कि कुछ चीजों में या कुछ प्रोजेक्ट्स में जब आप वो करते हैं, सडनली आप में इतना एनर्जी आ जाता है. समटाइम्स यू हैव सो मच enthusiasm, so much energy that even if that project takes few days or weeks or months, आप उसे बहुत अच्छे से निभाते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी का वेडिंग फैमिली में, वही चीज व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, व्हेन इट कम्स टू कंसिस्टेंट सर्विस, व्हेन इट कम्स टू कंसिस्टेंट प्यूरिफिकेशन, वो नहीं हो पाता है. तो द क्वेश्चन कम्स कि व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड क्या मैं लेजी इंसान हूं? सो द आंसर इज नॉट जस्ट, इट्स नॉट एज सिंपल as we sometimes say, oh, you are too lazy to do, you are not doing it. Laziness is just one aspect जो surface पे दिखता है, but then there are underlying aspects जो हम नहीं देख पाते हैं, and that is why we get stuck. So you keep removing laziness, but still sometime it doesn't work out. You keep purifying your solar plexus chakra, your basic chakra, आप उसमें से laziness का energy निकालते हैं, but sometimes there are more factors जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं या
समटाइम समझ में नहीं आता. नाउ द इंस्ट्रूमेंट, अभी हमारे करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट में हमारे एवोल्यूशन को आगे लेके जाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है दैट वी नीड टू यूज अदर देन आवर बॉडी इज द माइंड. यस और नो? सो माइंड का इस्तेमाल करके आप जब कोई भी स्पिरिचुअल कोर्सेस में जाते हैं तो आप ये अंडरस्टैंडिंग करते हैं दैट ओके दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस आई नीड टू डू, दिस आई नीड टू डू. यस और नो? इट इज द माइंड विच डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम एनिमल्स. हमारा जो माइंड है दैट इट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज. वो एक तरीके से हमारा बेन भी है, बून भी है, और हमारा मतलब ऑब्स्टिकल भी है. कैसे? सो माइंड जो है अभी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज स्टिल मिस्टीरियस फॉर मोस्ट ऑफ अस. माइंड को हम ठीक से समझ ही नहीं पाए. मोस्ट पीपल, अगर आप देखेंगे कॉमन मैन, वी रिलेट द माइंड विद ब्रेन. वी थिंक माइंड इज ब्रेन, but it is not true. Your brain is just a instrument of recording. Your brain is just an instrument of recording and accessing information, retrieving information, storing and retrieving information. Some parts of it gives certain signals, जैसे कि जो endocrine glands होते हैं and all that. But there is something greater than the brain which directs our actions, हमारे thought process को, हमारे words को, हमारे feelings को जो guide करता है. So mind is much bigger. अब अगर हम ये प्राणिक हीलिंग के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, so if you see that you have different bodies, हमारे कई शरीर होते हैं. We have the physical body, we have the emotional body, we have the mental body because you have done soul class, right? And then so on. Now, the first three bodies which we have, which constitutes your personality or persona, या सोल क्लास की लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो चीज आपका इनकारनेटेड सोल क्रिएट करती है. Incarnated soul is different, higher soul is different in the sense that there is a partition between them, there is a separating wall between them. So what constitutes incarnated soul are the three bodies. What are these three bodies? We know this: the physical and the etheric body, from which comes the pranic healing knowledge, the etheric, physical etheric body. Then is the astral body or the emotional body, which is the storehouse of all your feelings and desires. And then third is the mental body. But this mental body actually is a division or is a partition. So for example, in your house, initially there is just like one big room, one big space or a hall. Later on, in order to create live there or create rooms for different utilities, आप उसमें partition बनाते हैं. So similarly, the mind has two partitions. One is called the lower mind, another is called the higher mind. Lower mind and the higher mind. So pranic healing के language में हम बात बोलते हैं that the throat chakra and below, listen carefully, not only the throat chakra, but throat chakra and below constitutes part of the lower mind. Ajna chakra and higher constitutes part of the higher mind and the soul. मतलब अगर हम अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो everything below the throat chakra is your lower mind. Everything above your high Ajna chakra, Ajna and higher, is the higher mind plus your other subtle bodies, आपके जो दूसरे सूक्ष्म शरीर है. यहाँ तक सबको समझ में आया? Is this clear to you? We are just revising what you already know. I have not started yet the subject. We are just creating a base for the discussion. So this lower mind
has also partitions. These are called the sub-layers. For example, your physical body is also constituted of 7 layers, which you can read from the basic pranic healing book. The first 3 layers of your physical body is made up of solid, liquid, gaseous. Okay. Then there are 4 sub-layers of your physical body, which you call the 4 etheric sub-layers. So the first 3 creates the dense physical body, which you can feel, see, and touch. But then there are 4 higher bodies or subtler sub-layers of your energy body or your physical body, which is the 4 etheric layers. We'll not go into in this subject, in this discussion, we'll not go in a lot of depth in any particular aspect. Otherwise, you will get too confused. So just remember, every body has 7 sub-layers. Your physical body has 7 sub-layers. Emotional body has 7 sub-layers. Mental body has 7 sub-layers. And this in its totality creates the soul, the incarnated soul. Okay? Now, the incarnated soul has access. अभी तक हमारे evolution में ज्यादातर हम हमारे जो ग्रॉसेस्ट या लोएस्ट बॉडीज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम फिजिकल बॉडी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. हम इमोशंस जो एक्सप्रेस करते हैं, द इमोशंस वी एक्सप्रेस, यूजुअली देयर आर मोर लोअर इमोशंस like anger, fear, stress, irritation, and so on. Similarly, the thoughts the level we think are mostly the lower layers, sub layers of the mind. या ऐसा बोलेंगे कि अभी भी हम लोअर फ्रीक्वेंसी पे सोचते हैं, मेंटल फ्रीक्वेंसी पे. द प्रॉब्लम विद दिस इज, ये जो फ्रीक्वेंसी है जहां पे हम पूरी मासेस सोचती है, the entire masses thinks, is very populated. If you remember from the psychotherapy class, and Master has explained this, एक इंसान औसत or average thinks 60,000 thoughts, or at least processes or 60,000 thoughts and feelings in a day. एक दिन में 60,000 thoughts and feelings आपके माइंड से पास ऑन होते हैं. या आपके सोचिए कि think of your mind as just one signal from where cars are passing, and every car is like one thought. So 60,000 thoughts cross your mind every single day. Imagine कि आपने इतने साल जिया और उतने सारे thoughts आपने एक्सेस किए या गो थ्रू किए, जिसमें से मैक्सिमम जो थे जिसके कोई काम ही नहीं था, they were useless to you. But still, because हमारा माइंड अभी भी लोअर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, इसीलिए हम वो थॉट्स को एक्सेस कर पाते हैं. यहां तक सबको समझ में आया? इज दिस क्लियर टिल दिस पॉइंट? ओके. यहां से अब हम आगे की जर्नी में जाएंगे. यहां तक हमने बेसिक्स पे ही बात की है, जो आप मोस्टली जानते हैं. नाउ दिस माइंड, एज आई टोल्ड यू, जिसके लोअर 4 डिविजन्स हैं and higher 3 divisions हैं. So let's say there are 7 sub layers of the mind. Evolution के process में in millions and millions of years हम इसके 4 stories को क्रॉस किए. सोचिए कि your mind has 7, your mind is like a 7-story building. आपका mind जो है, it is a 7-story building, and उसमें से 4 stories जो हैं या 4 floors जो है आपने अभी तक चढ़े हैं, और अभी फिलहाल यू आर लिविंग एट द 4th फ्लोर. समझ में आ रहा है? सो 4th फ्लोर से जब आप उसकी बालकनी से नीचे देखेंगे, जितना दूर तक की चीजें आपको दिखेगी, जितनी डिटेल्स दिखेगी, उतना आप इवॉल्व हुए हैं. बट देयर आर सम पीपल हु हैव रीच्ड द 5th, 6th and 7th फ्लोर, एंड द लर्निंग, द अमाउंट ऑफ लर्निंग, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दे हैव, एंड लाइफ में जितनी उनकी क्लैरिटी है,
it is completely different. Okay, so इसमें एक और पॉइंट मुझे ऐड करना है. Just a minute, let me change the network. Just a moment. I hope this will be a more stable network. ये network ज़्यादा stable होगा. Okay, तो coming to the point, evolution के process में, as I was telling you, कि हमने कुछ सीढ़ियां चढ़ी हुई है, और इन क्या होता है, like in the law of the mind या माइंड के लॉस के अनुसार, जब भी आप एक सीढ़ी चढ़ के दूसरा क्रॉस करते हैं, वहां का सामान आप पूरा मतलब बटोर के आप दूसरे फ्लोर पे चले जाते हैं, और वो फ्लोर पूरा खाली हो जाता है. सोचिए, यू स्टार्टेड योर जर्नी इन लाइफ. फर्स्ट फ्लोर पे आप कुछ जन्म तक रहे या कुछ सालों तक रहे, कुछ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स रहे, एंड देन यू डिसाइडेड, ओके नाउ आई नीड टू ग्रो, एंड मे बी यू आर गाइडेड बाय सम टीचर टू प्रोग्रेस फर्दर. सो आपकी कॉन्शियसनेस जो थी वो सेकेंड फ्लोर पे गई. सो व्हाट यू डिड वाज यू हैड, मतलब आपको वो फ्लोर आपने खरीद लिया, बट अब आप वहां रहते नहीं हो, वो खाली फ्लोर है. ओके, बट यू लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर. एंड देन सिमिलरली आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स या थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, आपने फिर सीढ़ी चढ़ा, एंड देन यू वेंट टू द थर्ड फ्लोर, एंड यू केप्ट taking up your luggage and everything there. Now finally we are living on the fourth floor. बट उसके चलते क्या हुआ, एवरी फ्लोर जब आपको क्रॉस किया आपने, आपको उसको खरीदना पड़ा. सो इट हैज बिकम योर प्रॉपर्टी, बट बिकॉज इट हैज बिकम योर प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो एम्प्टी. वो खाली पड़ा है. ओके, नाउ एवरी टाइम दिस प्लेस इज एम्प्टी, वहां कुछ ना कुछ तो आके बसेगा या रहेगा. राइट, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कीप योर हाउस क्लोज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब आप आएंगे तो क्या आपको घर वैसा ही मिलेगा जैसा था, या वहां पे कुछ गेस्ट आके रुके रहेंगे. यू विल सी सम बर्ड्स, यू विल सी सम जिनने घोंसला बना लिया, यू विल सी सम रैट्स, यू विल सी सम स्पाइडर्स. उसमें आपको कुछ और भी चीजें इंटरेस्टिंग, कॉकरोचेस मिलेंगे, मॉस्किटोज मिलेंगे. सो ऑल दिस पेस्ट्स यू विल नोटिस हैज वो घर पे कब्जा कर लिया है. yes or no? So similarly, over several incarnations, evolution के ladder पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, the old layers or layers sub layers of your mind got empty, and वो ऐसी चीजों से भरने लगा जो चीजें आपके काम की भी नहीं है. So now we are coming to the subject of the subconscious mind. And जब हम mind पे बात कर रहे हैं तो there is a term called conscious mind, and there is a term called subconscious mind. So what is subconscious mind? Subconscious mind वो है जो आपके थ्रेशोल्ड के बिलो है, या आपके कांटेक्ट के बाहर का है, या मीन्स यू हैव इट, आपके पोजीशन में ही है, बट आप उसका इस्तेमाल या एक्सेस बहुत कम करते हो. ऐसा है कि साल में एक बार दिवाली के दिन आप जाके ताला खोल के देखते हो उसको, बाकी 364 डेज और 362 डेज आप ऊपर के ही फ्लोर पे रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम. राइट, सो व्हाट इज द सबकॉन्शियस माइंड? दिस इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन. सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा मेंटल डिस्क है जहां पे हर वो चीज रिकॉर्ड या स्टोर होती है जो आपके, या तो आपने उसको जमा किया कॉन्शियसली, या और कि कभी आप उसको इस्तेमाल करेंगे, या आपके माइंड ने खुद ही रिकॉर्ड किया. थिंक ऑफ योर माइंड एज अ सेंसर, या एक ऐसा कैमरा, जैसे घर के बाहर आपके सिक्योरिटी कैमरा होता है. अब उसमें से दिन भर में वो जितना भी कुछ रिकॉर्ड करेगा, उसको जो भी दिखेगा, ऐसा नहीं है कि सब चीज काम की होगी. पूरे दिन में से कोई एक एक्टिविटी जो आपको देखनी होगी वो काम की होगी, जो भी दुकान में या घर पे आपके कैमरा लगा होता है. सो
योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज इट वॉज एम्प्टी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एंड आपने उसको ओवरकम किया, आप एक हायर स्टेट में गए जहां पे आप अपने माइंड का और बेहतर इस्तेमाल करना आपने सीखा. सो दिस सबकॉन्शियस layers of your mind started to get filled automatically by everything you think. आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी इमेजिन करते हैं, whatever you dream, जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, ये सब आपका सबकॉन्शियस रिकॉर्ड करता है. अभी हम उसके डेफिनेशन में आगे आगे बढ़ रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, फिर हम देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या नहीं है, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे देर आर लॉट ऑफ discrepancies or arguments, but what I believe is this is what Masachoy Koksui has also validated, and this teacher has also given that subconscious mind वो definitely नहीं है जो हम सोचते हैं या आज तक हम जो पॉपुलर बिलीफ्स में सुनते हुए आए. कॉमन बिलीफ क्या है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में? आपने सुना होगा दैट इट इज अ स्टोरेज जहां पे आप अपने अनटैप्ड पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप कुछ अफर्मेशन करिए और आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा, आपकी विशेस मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी, सारे अच्छे आइडियल्स आपको या आपकी विजडम सारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है. ऐसा सब सुना हुआ है ना हमने? क्या सुना? वो आपने सुना होगा पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी. सो एक्चुअली इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू. रादर, अगर मैं आपको, मतलब मैं आई डोंट वांट टू ब्रेक द सरप्राइज कि अच्छी चीजें कहाँ से आती हैं, बट फर्स्ट आई वांट टू टेल यू कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है. सो सबकॉन्शियस माइंड डेफिनेटली डज नॉट स्टोर गुड थिंग्स. इट स्टोर्स मोस्टली गार्बेज. जैसे आप घर में समझिए, आपका घर का वो हिस्सा जो आप रोज यूज करते हैं, और एक होता है आपका गोडाउन. मुझे एक बात बताइए, आपके गोडाउन में आप कौन सी चीजें रखते हैं? वो चीजें जो आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करेंगे. गोडाउन यानी एज इन द स्टोर हाउस और स्टोर रूम. क्या वो चीजें रखते हैं जो अभी आपके काम की नहीं रही, बट फिर भी आप फेंकना नहीं चाहते? आपने बहुत साल इस्तेमाल किया, बट अब मन नहीं करता है फेंकने का, क्योंकि जब ली थी तब बहुत पैसे लगाए थे उसके पीछे, काम में नहीं है बट आपने रखी हुई है. सो थिंक ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ प्लेस वेयर यू स्टोर स्टफ जो आपके काम का नहीं है. कई बार उसमें आप ऐसी भी चीजें रखते हैं, जैसे किसी पड़ोसी ने या रिलेटिव ने कुछ ऐसा आपको गिफ्ट दिया जो आपके किसी काम का नहीं. लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे शादी में किसी ने मुझे एक व्हाट डू यू कॉल इट, वो रहता है ना, इंडक्शन इंडक्शन दिया था, गिफ्ट किया था, जो कि बाद में पता चला कि उनके घर का यूज किया हुआ इंडक्शन है. एंड इट डज नॉट वर्क. मतलब वो फॉल्टी इंडक्शन था, जो कभी तो भी उनको मिला होगा, कभी उन्हें यूज किया नहीं किया, उसी को गिफ्ट रैप करके चिपका दिया, एंड इट वाज यूजलेस, इट वाज कंप्लीटली, मतलब गॉन था वो. तो मैंने क्या किया, ऑब्वियसली व्हाट वे आई पुट इट इन द स्टोर रूम. सो यूजुअली ऐसी सारी चीजें जो हमारे किसी काम की नहीं है या आज काम की नहीं है, या जैसे कि आप न्यूज में या टीवी में बहुत सारी ऐसी चीजें सुनते हैं जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, बट आपके काम का हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. जैसे दूसरे देश में होने वाली कोई भी घटना आपके किसी काम की नहीं है, इस मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से या आपके सिटी के पर्सपेक्टिव से काम के नहीं है. सो सो ऑल दोस थिंग्स गेट स्टोर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड. यहां तक सबको समझ में आया? एवरीथिंग, आई रिपीट, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? ये एक डिस्क है आपका, जिसमें हर वो चीज जमा होती है जो आपने देखी है, सुनी है, महसूस की है, इमेजिन की है, वो सब जमा होता है.
और ये वो नहीं है जहां पे आप कॉन्शियसली एक्ट करते हैं, बट द पॉइंट इज, द फनी पॉइंट इज, मोस्ट ऑफ अस डोंट एक्ट और लिव कॉन्शियसली। हम ज्यादातर लोग, ज्यादातर या मोस्ट ऑफ अस, 90%, आपको ये सुन के शॉक लगेगा कि 90% ऑफ द डे हम सबकॉन्शियसली जीते हैं। वी थिंक दैट वी आर लिविंग कॉन्शियसली, कि हम जागे हुए हैं, नींद से जागे हैं, बट इट इज नॉट ट्रू। अभी जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे, यू विल बी हैव मोर सरप्राइजेस। So our subconscious mind is what dominates our life most of the time. Most of the time हम हमारे subconscious accumulations के direction पे जीते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? नाउ एक टर्म था कॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड। एक होता है सबकॉन्शियस, जिसपे हमने अभी छोटा सा ब्रीफिंग किया। एंड देन आपने सुना हुआ एक टर्म अनकॉन्शियस। आपने सुना होगा कि ये चीज मैं अनकॉन्शियसली की। सो जिसको आप अनकॉन्शियसली की बोला, दैट इज एक्चुअली द सबकॉन्शियस। आपने बोला आई वॉज नॉट अवेयर, मैंने भूल से कर दिया, गलती से हो गया, अरे मेरे ध्यान में नहीं था, आई डिड इट, आई फील गिल्टी नाउ एंड सो ऑन। सो आई डिड इट अनकॉन्शियसली, द वर्ड अनकॉन्शियस इज नॉट करेक्टली डिफाइंड। हम हमारे एक्शंस में, हमारे विचारों में, हमारे फीलिंग्स में या वर्ड्स में वही चीज करते हैं जो हमारे पास, जिसका एक्सेस है। हमारे डिस्क में जो डेटा है वही डेटा हम यूज करेंगे। तो वो डेटा किधर रहता है? इट इज इन द सबकॉन्शियस, इट इज नॉट अनकॉन्शियस। नाउ व्हाट इज द अनकॉन्शियस? अनकॉन्शियस माइंड is the part of the mind which we do not have access. Yeah, maybe once in a blue moon, once in a full moon, for just few seconds you access it, because we are a Hatha yogi, so we can say that especially when we meditate we have access to it. So unconscious mind is connected to the three higher layers of the mind. I repeat, unconscious mind is connected to the three higher layers of the mind, sub layers of the mind, जिसका ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, या अभी तक हमारे इवोल्यूशन में वहां हम पहुंचे ही नहीं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कौन ऐसे लोग हैं जो इस हायर माइंड का इस्तेमाल करते हैं या माइंड के इन अनकॉन्शियस स्टेट्स को एक्सेस करते हैं? दुनिया में, इन द वर्ल्ड, whoever people brings change, whoever people brings transformation, invention, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, या फिर कोई एक ऐसी चीज जो लोगों के लाइफ में बदलाव लाए, some kind of even artists, even some of the music or composers or book writers, authors, वो जो एक ऐसा लेख लिखते हैं या एक ऐसा पेंटिंग या ड्राइंग बनाते हैं जो लोगों को हायर आइडियल से जीने के लिए इंस्पायर करता है। आई विल रिपीट दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनकॉन्शियस माइंड इज कनेक्टेड टू आवर हायर स्टेट्स ऑफ माइंड, जिनका एक्सेस वही लोग करते हैं जो लाइफ में आप देखेंगे दे क्रिएट चेंज, दे ब्रिंग एंड दे लिव बाय हायर आइडियल्स। मतलब वो लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचेंगे, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने से बचेंगे, कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे विच इज कंस्ट्रक्टिव, हेल्पफुल, एंड हेल्पफुल टू मोस्ट पीपल, नॉट जस्ट फॉर फ्यू पीपल, फॉर द मासेस। सो ऐसे लोग जो हैं, दे आर नाउ इन द जर्नी टू एक्सेस द हायर स्टेट्स ऑफ माइंड। सो हायर आइडियल्स, हमारे प्राणिक हीलिंग में जो हमने वर्च्यूज बताए हैं, ऑल द वर्च्यूज exist in the higher planes of the mind. So from the pranic healing point of view, every time जब हम character building करते हैं, every time you do the blue triangle,
Every time you do the inner reflection from resolution, you are slowly being trained to access the higher mind. Whenever you pray, God, bless me with love, with peace, with harmony. Thank you for blessing me with character building, with self mastery, soul mastery. ये जो prayers master ने बताया है character building की, it is when you are trained to consciously access the higher mind. इसलिए आप देखिए जब आप रेगुलर मेडिटेशंस करते हैं, रेगुलरली प्यूरिफाई करते हैं, फॉर सम टाइम यू विल नोटिस योर लाइफ बिकम्स मच बेटर. यस और नो? यू हैव क्लैरिटी, आपके अंदर क्लैरिटी होता है. देयर इज मोर गाइडेंस. देयर इज लाइक अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं. बट अपने आप कुछ समय बाद फिर से एक फेज आता है जहां आपको लगता है कि आप सिंक हो रहे हैं. फिर से यू फील कि अरे आई नीड टू मेडिटेट मोर, I need to do more purifications. So that is when again your consciousness is sinking to the lower layers of the mind or the subconscious mind. यहां तक सबको समझ में आए? तो अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स या जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में हैं वो दो नाव में जीते हैं. समझिए, मासेस का प्रॉब्लम नहीं है, मासेस तो सबकॉन्शियसली ही जीते हैं. सो उनके लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स, अच्छा गलत, या आएगा, दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट उनके लाइफ में क्या चल रहा है. वो एवरीथिंग इज बीइंग गाइडेड बाय द सबकॉन्शियस. अब उसमें अगर नेगेटिव अक्यूमुलेशन होगा तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आएंगे, अच्छा होगा तो बीच बीच में कुछ अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे. बट इन जनरल अगर आप ऑब्जर्व करें, यू विल नोटिस इन द लाइफ ऑफ मोस्ट कॉमन पीपल जो मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस होते हैं, दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड. एंड इमीडिएटली जहां वो उसको एंजॉय करना की कोशिश करते हैं, या द मोमेंट दे स्टार्ट टू become happy, suddenly something happens and then that happiness is gone. Some incident will happen that will pull them down towards sadness, depression, anger, and so on and so on, complaining and so on. So that is the case with the most of the masses. Now in case of ourselves, our Hartik yogis or Pranic healers, आप notice करेंगे when you started first practicing Queen Heart's meditation, and if you did it for few weeks or months regularly, वो months and years जो आपके थे, they were golden years, especially when your Twin Hearts was regular and when you were regularly healing and blessing people. तो आप देखते थे कि आपके लाइफ में कितना क्लैरिटी था. यू हैड सो मेनी ब्लेसिंग्स कमिंग टू यू. फॉर एग्जांपल, जब मैंने हार्ट योगा किया इन 2010, एंड आई रिमेंबर इन 2008 मैंने बेसिक किया. फ्रॉम दैट टाइम टू ऑलमोस्ट 2 years, 2 साल, आई डिड ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन एवरी डे. सो उन 2 सालों में मेरे कॉन्शियसनेस में जो चेंजेस आए, दे वर अमेजिंग, ट्रेमेंडस. इतनी सारी चीजों का क्लैरिटी होता था, या अभी भी काफी सारा है, जो ऐसा लगता था कि पहले ये चीजें क्यों नहीं समझ में आई. बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आंसर यूं ही दिख जाता था, एकदम सिंपल, ओके दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द सोल्यूशन. तीसरा, एक हमेशा स्टेट ऑफ चेयरफुलनेस और एक जॉय का स्टेट हमेशा रहता था. और चौथी जो सबसे अच्छी चीज हुई कि मेरा प्राणिक हीलिंग में आने के पहले का लाइफ एंड द फर्स्ट 3-4 years, 3 से 4 साल जो थे, उसके पहले द लाइफ वॉज वेरी मिजरेबल. So many problems, health problem, relationship problem, financial problem, and so many other things. But when I did pranic healing basic course, and then I started to do Twin Hearts meditation every day and started to purify using pranic psychotherapy, I noticed every little desire of mine, every little wish which I could have wished
I would have wished somewhere in the past started to materialize. एक आधा कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी मटेरियलाइज हुए, बट बिकॉज ऑफ माय कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ ट्विन हार्ट्स, consistent self psychotherapy, I could see within a span of 1 year or 2 year a lot more good things coming to me in एक short span के अंदर में, जो पहले कभी नहीं हुआ. Like if I say compare 5 years of my life or 10 years of my life, कि ये चीजें हुई, मतलब बुरी चीजें हुई और दो चार अच्छी चीजें हुई. In that 1 year or 2 year, so many good things happen and only just a few bad things happen. So when I look back and see, I realize कि the practice of Twin Hearts meditation and maybe the meditation on the soul actually helps raise your consciousness to the higher planes. And अगर आप regular हैं तो आपका awareness higher planes में ज़्यादा समय तक रहता है, so that you have more clarity throughout the day, जब तक उसका effect होगा meditation का. I think this is the reason why Master said you have to meditate for the rest of your life. It's not कि आपने खाली full moon to full moon meditate किया and your problems are okay solved. उसका कारण ये है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो भी accumulations हमने किए हैं, जो भी programmings या patterns are there, they have been there for thousands of years. हमको लगता है कि बॉडी डिस्ट्रॉय होता है, बट इम्प्रेशंस जो होते हैं, जो भी हमने लाइफ एक्सपीरियंसेस लिए या नहीं लिए, वो सब हमारे सीड्स में जमा होते हैं, परमानेंट सीड्स. यू रिमेंबर फ्रॉम द सोल क्लास, फिजिकल परमानेंट सीड, इमोशनल परमानेंट सीड, मेंटल परमानेंट सीड, वो सब में जमा होते हैं. नेक्स्ट टाइम वो एक तरीके से एक पल्स क्रिएट करते हैं, जिससे सिमिलर एक्सपीरियंसेस, वाइब्रेशंस और थॉट फॉर्म्स आप वापस अट्रैक्ट कर लेते हैं. नॉट ओनली दैट, I think in the Kriya Shakti course, Master has said that sometimes जो भी previous lifetimes में हमने कुछ ऐसे thought forms create किए थे which were really really strong. So according to him, sometimes these thought forms lives for hundreds of years. Even when you are reincarnate, they are still alive, and the moment they recognize your energy, they are attracted back to you. So पिछले जन्मों के भी thought forms जो आपने बहुत strong create किए थे, they come back to your subconscious mind by the power of attraction, and then they manipulate your life or change your life. So basically, as I was saying कि ये मेरा experience रहा है that the teachings of pranic healing and Ahatic yoga has helped transform my life personally in amazing way. In the early few years of journey, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि I could relate कि मेरे life के, like I came to pranic healing when I was 21 year old, and उसके पहले का 21 years was very very, means at least there was some time which was good, but at least 14 years of my life before that was really bad, or I would say filled with challenges and difficulties. So जब मैंने I started to meditate regularly for 1 year or 2 year, I saw tremendous transformation, manifestation of all the good desires. And Master ने एक बार एक retreat में बोला भी था, he said that, you know, through the blessings of the Guru, and I used to do a lot of service, through the good karma of service, sometimes you do not realize this, but you're living the heavenly life. आप heavenly life जी रहे होते हैं. Har din is like a day of joy and happiness and bliss. You make the mistake of thinking that it is normal. I repeat, sometimes this happens that for months or years, you have a fantastic life. Okay. You think this is only your good karma. It's not just good karma. It is, other than the good karma, it is the grace of the Guru. It is the blessings through which you are living a heavenly life because of the hard work you have put, the service you have done, the humility you have shown, and so on. फिर कभी ऐसा होता है that when you start to become
टू bloated or proud, तभी फटका पड़ता है. When the energy coming from your soul and the guru is reduced, and हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर के पैटर्न्स वापस मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, देन यू रियलाइज ओ माय गॉड, ये किधर से आ गए प्रॉब्लम्स. अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था. Especially when you stop doing service, sometimes when you take it for granted कि regular purifications and regular meditations are so important. Even a day if you miss doing the blue triangle and the invocation Sharnagati, I have personally noticed this several times, that elementals come negative. You have been meditating for so many years, but even if 2-3 days if you miss your meditations, your energies go down and your elementals come, negative elementals, and the subconscious patterns start to take you down. Okay, so I was just relating my experience to make you understand that from one point of view that meditations help raise our consciousness. Now coming back, most of us or all of us, we still have a lot to clean, lot to take out from the subconscious mind. So remember this: if you're not meditating regularly, if you're not doing conscious active service, as a Ratik Yogi I'm talking about, if you're not purifying yourself, practicing the 5 pillars of Arahatic Yoga, you are living by your subconscious mind. वो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स जो है उससे ही आप जी रहे हैं. यू आर लिविंग लाइक अ रोबोट. जो भी एक्यूमुलेशंस आपके माइंड में हुए हैं, जो भी आपका माइंड हर दिन जमा करता है, उन सब चीजों से जो देख रहा है, सुन रहा है, उसके एसिमिलेशन से, प्रोसेसिंग से आप जी रहे हैं. सो इट्स लाइक आपका जो कंप्यूटर है वो करप्टेड है विथ लॉट्स ऑफ वायरसेस, एंड वो वायरसेस किसी भी प्रोग्राम में जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं, उसका जो भी आउटपुट आ रहा है, दैट इज योर लाइफ. डिड आई से समथिंग? सो वी डू नॉट वांट टू लिव लाइक दिस. वी वांट टू लिव मोर कॉन्शियसली. नाउ क्या क्या माय क्वेश्चन इज, क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी स्टोर करता है इंफॉर्मेशन या रजिस्टर करता है व्हेन यू आर अवेक और ऑल्सो व्हेन यू आर स्लीप? क्या लगता है आपको? जब आप सो रहे हैं वो तभी रजिस्टर करता है या जाग रहे हैं, सॉरी जाग रहे तभी करता है या सो रहे तभी भी करता है? सो द आंसर इज इवन व्हेन यू आर अस्लीप, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, इट कीप्स रजिस्टरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग. बोलने का मतलब टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इट मीन्स. सोचिए आप एक रास्ते से जो गुजर रहे हैं. ओके, आपकी आंखें तो दो ही है, जो सामने देखती है या थोड़ा साइड देख पाती है. सो व्हेन यू आर वॉकिंग थ्रू अ मार्केट जहां बहुत सारे एड बोर्ड्स लगे हैं, बहुत सारी चीजें लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कहीं कुछ घटना हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, every little thing is being registered by your subconscious mind. चाहे वो आपने आंखों से देखी हो या ना देखी हो, if you are in a place जहां पे बहुत सारी चीजें हो रही है, वो सारी चीजें आपका सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर करता है. सारे साउंड्स रजिस्टर करता है, सारे कॉन्वर्सेशंस रजिस्टर करता है, चाहे वो लोग धीरे ही क्यों ना बात कर रहे हो. साउंड फ्रीक्वेंसी चाहे वो कितनी भी धीमी बोली जाए, इट इट फ्लाई ट्रेवल्स थ्रू एयर और वो रजिस्टर होती है, बिकॉज योर माइंड इज लाइक अ रेडियो टावर और अ रेडियो इक्विपमेंट. यहां तक सबको समझ में आया? Now, what happens when you do not train your subconscious mind? जब आप अपने
सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं करते हैं एंड यू डो नॉट टेक एफर्ट एवरी डे टू क्लीन इट, टू प्यूरिफाई इट, यू बिकम अननेसेसरी विक्टिम, जिससे कि आप ऐसे एक्शंस करते हैं विच जनरेट नेगेटिव कर्मा. सो इन अ सिंपल वे आई वुड से your subconscious mind stores the low vibration information. लाइक आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों को क्रिमिनल चीजें या फिर चोरी चकारी वाली मूवीज या ये सारी चीजें क्यों पसंद आती है? बिकॉज इट रिलेट्स टू द कंटेंट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. ज्यादातर मूवीज जो सुपर हिट होती है, जहाँ पे हीरो विलन्स को धो रहा होता है एंड देन यू नो देर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस, लॉट्स ऑफ क्राइम, people love enjoy watching it. Like there was this show called Money Heist. उसमें बहुत सारे चोर मिलके बहुत इन डेप्थ प्लानिंग करके अपने मास्टरमाइंड का इस्तेमाल करके दे आर fooling governments, they are stealing money, and they are still becoming heroes in front of the masses. So this show became viral at a particular time, एक कुछ साल पहले, viral sensation. Even I watched it at that time, and it was a really good show. But the essence is that when you live subconsciously, you attract, या आप ऐसी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं which are connected to which are against the soul evolution. आपको पता नहीं होता है आप वो कर रहे हैं जब तक कि आप अवेयरनेस में नहीं आते. सो वॉचिंग क्रिमिनल न्यूज, न्यूज ऑफ रेप और एक्सीडेंट्स, वो चीज हम लाइक आपने देखा होगा कि जब तक सोशल मीडिया नहीं था, लोग एंड टू एंड, वर्ड टू वर्ड पूरा पेपर चाट लेते थे. दे यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर. आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर न्यूज़ पढ़ते हैं, जबकि उसमें से 80 to 90% न्यूज़ इज गार्बेज, जिससे उनके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आने वाला है. इट इज जस्ट गार्बेज गोइंग इन एंड गार्बेज गोइंग आउट. एंड कई बार नहीं पढ़ा तो वो बेचैन हो जाते हैं जब न्यूज़ नहीं पढ़ा. सो इट हैज ऑलमोस्ट बिकम अ सबकॉन्शियस पैटर्न विद इन देयर लाइफ कि दैट ब्रिंग्स. तो सोचिए कि कैसा लाइफ हम लोग जी रहे हैं. कई लोग हैं जब तक सोशल मीडिया पे 4-5 पोस्ट नहीं देखते. फॉर एग्जांपल कुछ महीने पहले आई वाज एडिक्टेड टू जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द इंटरनेट, इंस्टाग्राम पे, एंड देन आई रियलाइज आई एम वेस्टिंग सो मच ऑफ माई टाइम. कुछ चीजें बहुत अच्छी होती है, हिलारियस होती है, जोक्स होते हैं, यू नो मीम्स होते हैं, समथिंग समटाइम इट इज गुड, मे बी वंस इन अ वाइल फॉर मे बी फ्यू मिनट्स, but only when you know that you can control it. And आपने उतना देर देखा for a few minutes and then you stop it. उतना अगर डिसिप्लिन है तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है, यानी you go on and on and automatically you before you realize, जो मेरे साथ हुआ कि whenever my mind is vacant, whenever like say मैंने एक हीलिंग की, मेरा पेशेंट गया, आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पेशेंट टू कम, और आई वेंट टू द वॉशरूम, और आई एम ईटिंग फूड, या कहीं पे मैं जाके जस्ट बैठा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर समवन, ऑटोमेटिकली द हैंड गोज इन द पॉकेट एंड द फोन कम्स आउट, एंड बिफोर आई नो आई एम स्क्रोलिंग इंफॉर्मेशन ऑन द फेसबुक और इंस्टाग्राम. सो ये जो चीज है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ when we live by the subconscious mind, yeah, subconscious patterns. So I decided, oh my god, I'm spending wasting a lot of my time. So from almost, I think, a few weeks I have been conscious about it. So जब भी मेरे पास, हालांकि मेरे पास काम के चलते 2 फोन हैं, but now I am very careful कि जब भी मेरे हाथ में मैं फोन फिर भी उठाता हूँ, so I become, it's like alert, okay, what I'm going to do with it. क्या मैं कुछ काम का कॉल कर रहा हूँ इसमें, या फिर इफ आई एम गोइंग टू मेक अ नोट ऑफ समथिंग आई वांट टू रिमेम्बर, या आई वांट टू पुट अ मेडिटेशन ऑन द फोन, या फिर आई एम गोइंग टू टर्न ऑन इंस्टाग्राम. शुरू शुरू में ऐसा हुआ कि व्हेन आई बिकम अवेयर ऑफ इट, इनिशियली आई वुड ओपन द इंस्टाग्राम, 1-2 रील जब आगे हो जाती थी तब याद आता था, ओके आई नीड टू स्टॉप इट. एंड देन नाउ इट हैज बिकम
लाइक अवेयरनेस में एक बार आ गया तो नाउ आई कैन इजीली कंट्रोल इट. तो लाइक आज हम लोग वी वर पासिंग बाय अ स्ट्रीट, यू नो, इट वाज लाइक अ मेन वेरी बिजी स्ट्रीट. और दो सिग्नल थे. सिग्नल जो था वहां पे गाड़ियां क्रॉसिंग होती है ना, लाइक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है. तो एक लड़की पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बिल्कुल बीचों बीच, बिकॉज वहां से बड़ी बड़ी कारें जा रही थी, इमेजिन, पीछे भी गाड़ियां, आगे भी गाड़ियां, एंड शी वॉज इन द सेंटर ऑफ द पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, and she was holding a phone and checking the phone. Meanwhile, she is waiting, and that was shocking. कि हम कितना enslaved हो गए हैं हमारे subconscious patterns के वजह से. We are almost asleep. So one of the objectives of this session is to, you know, first shake you and wake you up. It's a session of awakening you. You means you, the soul. And then by the end of this session tomorrow, and इसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट मंथ, वी होप दैट इस बैच से शुरुआत करके इसको हम और भी बढ़ाएंगे आगे. वी होप दैट वी कैन क्रिएट bunch of people, let's say a few hundred people, who live more consciously. Do you think it's a good project? Ki through a project like this, we train even arhatic yogis, even pranic healers, to live more consciously, to take responsibility of their actions, live live more as a soul. ये question जो था, like I will tell you, when I used to attend some of the nurturing sessions मेरे शुरू के सालों में with the acharyas or masters, whenever we used to exercise, whenever we used to do some practices, masters would always say, meditate as a soul, exercise as a soul, do this affirmation or that mantra as a soul. So it's a question, what does it mean to do it as a soul? I wanted to understand it. Because when I'm speaking, you know, I'm using my voice. The voice comes from the throat, which is the body. Or whenever I'm exercising the body. Yes, ये जो awareness आने में time लगता है that I am the soul, I am energy guiding this form. But जब मैंने ये सब्जेक्ट पे पढ़ना शुरू किया सबकॉन्शियस माइंड के, it answered a lot of questions. Plus मेरे recent study, I have done some research study in the teachings of Osho. So that and some of the books on Zen Buddhism. So it actually helped me understand the difference of living as a person or a personality and living as a soul. Living as a soul means living consciously or with awareness. सडनली ऐसा नहीं हुआ कि आप अपने आप को स्पिरिट फॉर्म में फील कर पाओगे फ्रॉम डे वन, बट द फर्स्ट स्टेप टू लिविंग एज अ सोल इज टू लिव कॉन्शियसली, बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस. आप जो सोच रहे हैं, आप अपने थॉट को देख पा रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन. आप जो बोल रहे हैं, आप अपने वर्ड्स को देख पा रहे हैं. आप जो महसूस कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं खुद. जैसे कई बार लोग गुस्से में कुछ बोल देते हैं, बाद में बोलते हैं कि मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया. इट मीन्स दे आर asleep, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स, दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स. फिर एक ऐसा होता है जहां गुस्से में आते आते खुद को रोक लिया और रियलाइज हुआ, व्हाई वाज आई गेटिंग सो एंग्री. इतना इरिटेट होने की क्या जरूरत है, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है. समझ में आ रहा है. सो देर आर स्टेजेस और देर आर लाइक डिग्रीज इन विच हमारा अवेयरनेस जो है बढ़ता है एज अ सोल. दैट इज एंड इट इज अ जर्नी. हफ्ते में 2 बार या 1 बार आध्यात्मिक ध्यान करना इनफ नहीं है. जब हम कल बात करेंगे प्रैक्टिकल्स पे और जब कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, तो वो एक्सरसाइजेस को हमें रोज करना है. हमारा गोल क्या है या हमारा एजेंडा क्या है कि from functioning 90 to 95% unconsciously, we want to function at least
70-80% कॉन्शियसली और 90% कॉन्शियसली। तो बाय द एंड ऑफ 2025 और एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 2 to 3 years ये आपने गोल बना के चलना चाहिए, एंड देन यू विल सी योर लाइफ इज ट्रांसफॉर्म। ये तो बहुत बड़ा मतलब टारगेट मैं आपको बोल रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू दिस टीचर टॉर्क होम एंड इवन मास्टर चौकसी एंड मेनी अदर टीचर्स, अगर आप शुरुआत दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट कॉन्शियसली रहने की कोशिश करेंगे, मीन्स यू विल फोर्स योर सेल्फ टू बी अवेयर और कॉन्शियस, slowly this 5 minutes will turn into maybe few hours, और बाय द एंड ऑफ द ईयर हो सकता है कि कुछ दिन या कुछ हफ्ते पूरे साल में आप कॉन्शियसली अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पाए और उसको करेक्ट कर पाए। यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन यू विल हैव। आपके अंदर जो बदलाव आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस जो आएंगे, वो ट्रेमेंडस होंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम लास्ट almost 6 months or more than 6 months, हर दिन आई मेक श्योर दैट सोने से पहले और सुबह किसी भी एक्टिविटी में एंगेज होने से पहले एटलीस्ट 10, 15, 20 मिनट्स आई प्रैक्टिस अवेयरनेस। इस पे हम लोग कल और बात करेंगे, बट इट हैज हेल्प मी ट्रेमेंडसली अपने आप को ऑब्जर्व करने में। और एक IRFR करते हैं हम लोग, इनर रिफ्लेक्शन करते हैं, बट समटाइम्स other than inner reflection you just need to simply observe your life। तो इसमें हम लोग कल बात करेंगे। अभी हम लोग वापस जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड के टॉपिक पे। बाय द वे, डू यू नीड अ क्विक 2 minute वॉशरूम ब्रेक? 2 minute, 3 minute वाटर ब्रेक, वॉशरूम ब्रेक चलेगा? लेट्स टेक अ क्विक, अभी कितना बज रहा है? 7:18 हो रहा है। सो 7:22 या 7:23 को वापस आ जाइए। कम बैक क्विकली इन 5 minutes। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। ओके, आगे बढ़ते हैं। Now, why is it important to discuss this subject again? And why do people need to be aware of it, right? So, most of the negative life experiences जो हमको आते हैं, प्लस जो भी हम गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, जब भी हम वर्चू ब्रेक करते हैं, जब भी हम कोई क्रिमिनलिस्टिक टेंडेंसी करते हैं, या कई बार कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जो हमने बहुत रिग्रेट किया, मतलब बचपन से लेके अगर आप आज तक याद करें, जो भी चीजें ऐसी हुई जिसको सोच के आज भी आपको ट्रॉमा आता है कि आपने ये क्यों किया, ऑल दैट हैपेंस, और all that experiences happen because of the contents of our subconscious mind। सबकॉन्शियस माइंड में जैसे प्रोग्रामिंग्स, जैसे पैटर्न्स, जैसी एनर्जीज हमारे अंदर रहेगी, वैसे ही हमारा लाइफ रहेगा, वैसे ही हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस रहेंगे। किसी भी चीज को ट्रांसेंड करने के लिए पहले हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक जंग में जा रहे हैं, युद्ध पे, तो आपको क्या तैयारी करना है, आपके एनिमी को हराने के लिए आपको पता होना चाहिए। इफ यू आर नॉट अवेयर एंड इफ यू गो अनप्रिपेयर्ड, यू विल बी डिफीटेड। इसीलिए हम लाइफ में कई बार फेल होते हैं, कई बार मिजरेबली वी फॉल या वी एक्सपीरियंस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। इसीलिए होता है क्योंकि हमें उसका कोई स्टडी, कोई एजुकेशन, कोई प्रिपरेशन नहीं कराया गया। वाई पीपल इन द वर्ल्ड आर मोस्ट जनरली, मतलब मटीरियलिस्टिक या स्पिरिचुअलिटी से दूर क्यों है? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज है ही नहीं। दूसरी बात जो मैंने शुरू में कही थी, आई विल रिपीट, सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट अ प्लेस where you keep good things, used, broken, torn, और ऐसी चीजें जो अब आपके जर्नी में, लाइफ जर्नी में
काम की नहीं है, वही चीजें हम डंप करते हैं हमारे सबकॉन्शियस में, या मिलती जुलती वैसी ही चीजें, सिमिलर थिंग्स योर सबकॉन्शियस माइंड attracts and stores. So even if you're progressing spiritually, your subconscious mind will keep storing contents which you hear from people you do not like, from the news, from the social media, from the newspaper, and from everywhere around you. Because most people are not spiritual. Most people speak or live according to their subconscious mind. So then the questions come कि अच्छी चीजें आती कहां से हैं? Where all the good things in life come from? Are you interested? All good things in life comes from your soul. I repeat, all good experiences, all wisdom, all guidance, all good experiences come from your soul. When I say soul, specifically it comes from your 12th chakra. So I would like to review your knowledge from the soul class when Master Chokoksui explained, I am the soul. I am that I am. When you say I am that I am, what is that I am? Where is that I am? So I am जो है, that is what is 12 inches above your head. आप वो 12 chakra है, you are that soul which is living on that 12 chakra. That is your house. The physical house you live is not your house. Your true home is that 12th chakra. And that is exactly the storehouse. Listen and listen carefully. So there are, let's say there are two discs. एक अच्छी चीजें accumulate करता है, एक खराब चीज accumulate करता है, broken, टूटी फूटी, confused, torn या manipulated. ऐसी सारी चीजें जो चीज स्टोर करता है वो है हमारा subconscious mind. All good experiences, all positive experiences, all guidance, all the powers, all your virtues. Character building में जब आप blue triangle करते हैं, all the virtues, energy of the virtues come from your 12th chakra. It comes from the soul. So anything, any good that is happening to you or in your life, it is not because that you have done some affirmation जो आपके सबकॉन्शियस में चला गया और वो सबकॉन्शियस ने मटेरियलाइज किया. नो, इट कम्स फ्रॉम योर सोल. ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, देयर वाज अ टाइम आई हैव नॉट इवन टेकन क्रिया शक्ति कोर्स, प्राणिक हीलिंग में जिसमें हम मटेरियलाइजेशंस करते हैं. And but what I used to do is I used to be very regular with my meditations, my purifications, my service, and practices. So obviously, when you are purifying regularly, when your aura is super, super clean, there is a greater connection. Your spiritual cord is big. And when you do service, you generate good karma. When you do tithing, you generate good karma. All the manifestations that happens in your life are positive manifestations. ये बात जानना हम सब के लिए इस डिस्कशन में बहुत जरूरी है. गुड थिंग्स आर नॉट परमानेंट. जैसे नेगेटिव थिंग्स परमानेंट नहीं होती है, गुड थिंग्स भी परमानेंट नहीं होती. जितना कार्मिक एंटाइटलमेंट आपके पास होगा, जितना स्पिरिचुअल कनेक्शन यू विल हैव, the bigger your spiritual cord is, the more you're connected with your soul, the cleaner your aura is, the more entitlement you have through service, the more positive manifestations will come. चाहे आपने उस समय पे क्रिया शक्ति की हो, गोल्स लिखे हो, प्रे किया हो, whatever you have done, or maybe you have just thought once, oh God, if I can get this thing in my life, I wish I could get this or get that. And you notice, wow,
all these things are materializing, वो आपके लाइफ में हो रही है, then you say, oh, I just did my Kriya Shakti class, that is why it is happening. You give all that credit to that course rather than to the entire, you seeing the entire process. Why I'm telling you this, I'm not saying that Kriya Shakti course does not work. What I'm saying is, I have taken almost many courses of pranic healing and then many other things. मैंने वो लॉ क्या बोलते हैं प्राणिक हीलिंग से पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी किया था. But there was a time in life when good things were materializing very easily, effortlessly. फिर एक फेज आया लाइफ में when I am doing Kriya Shakti, I am doing the blue triangle, or I am blessing people, doing tithing. But I was not practicing the 5 pillars of Arhatic Yoga in its totality. Maybe sometime I was not doing enough service. Maybe sometimes I was not, purifying enough. So it was like half-heartedly, on and off. कुछ हो रहा था, कुछ चीजें नहीं हो रही थी. So what I realized after some time, maybe after a few months or years, my manifestations stopped. अच्छे manifestations होना कम हो गए. I'm not saying कि बंद हो गए, कम हो गए. For example, if I want कि मुझे इनकम मेरा ये महीने में इतना चाहिए, I'm making my Kriya Shakti, doing everything, सब कर रहा हूँ. It is not materializing. Then the next month, I'm trying, not materializing. पूरे साल का गोल बनाया. I thought of some amount in my life, but उसका तो 50% or 40% भी I am not able to reach the goal. So at the end of the year, I would reflect, why is this happening? तो जब मेरे पास पूरा information नहीं था, I knew that sometime my practices are कम ज़्यादा हो रहा है. But at the end, what I would do is, I would say, कुछ तो कर्मा आया होगा. Like most of us do. I would say, oh, मेरा ही कुछ negative karma होगा. Because of this, it is happening. Now, one thing I came to learn in my discovery or in my study was, not everything is negative karma. And that was shocking to me. I repeat, every bad thing that happened to you, every unpleasant experience that happened to you is not your negative karma. So there are two things which happen. Now, how do you know if something is negative karma or not? Negative or positive, whenever a karmic lesson comes, this is my experience also. जब कोई karmic lesson हमें आता है and उसके through जो भी suffering आती है, I have seen when that karma is over, there is a transformation in your life. You progress, you attract insights, you see changes, positive changes in your life. But I've seen also that there was a period of time in my life where almost every day is like कुछ ना कुछ चीजें problems हो रही है and I'm stuck and nothing is working out for a very long period of time and I cannot find the reason. Ultimately, obviously, you say it could be my karma, but वो जब finish हुआ उसके बाद भी I could not see like a transformation जैसा कुछ नहीं दिखा मुझे. So when I read this in one of the books, I was surprised because the author or the teacher said, not everything is your negative karma. So sometimes because of lack of purification, lack of character building, sufficient character building, lack of sufficient karma, good karma, or service, and especially जब आप awareness से नहीं जी रहे हैं, you're not living as a soul, these subconscious elements, they take charge of your life. So मेरे साथ भी ऐसा हुआ है in the initial, मतलब बीच बीच में एक phase आता है when you are demotivated to meditate, या आप पूरा 5 pillars practice नहीं करते हैं, you do not do your meditations regularly इतना service नहीं हो पाता है, and you see that your life goes down on those phases. पूरा नहीं जाता because
obviously the soul, your soul and guru helps you. Isliye, this is one of the reasons why master has emphasized the practice of purifications pillars on a daily basis. It is not कि उनको आपका track record चाहिए for your level change or for your further progress, but it is only to protect us from the harm or danger that awaits us because of whatever accumulations we have in our subconscious. यहाँ तक सबको समझ में आया? Do you want to ask any questions before we proceed? There is a little more information I need to share. We have almost 23 minutes left. तो और points है. But अगर आपका इस point तक, if you have any questions, जो भी आपने सुना, you can ask. Just raise your hand, I will unmute you if you have a question. कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया? Bhupinder. Okay. Yes, Bhupinder. Can you unmute yourself? What is your question? I have allowed you to unmute. You can now unmute. Yes. Hello. Yes, hi. Yeah, Atma Namaste. Atma Namaste. I just wanted to ask, like आपने कहा that I mean it's very beautiful session. I'm listening. I'm on the way from my office, but it's such a beautiful. It's very simple. Uh, but I was just thinking when we are in office or we are with certain kind of people, how Mhm. to maintain that kind of balance, that we should not be we should be cleaning our subconscious mind daily. Like आपने बीच में शायद एक बात भी कही थी कि हम दो नाव में होते हैं. Yeah. As a disciple, So yeah. वो दो नाव वाला, because we will be accumulating that kind of stuff, but I don't know, because maybe I am in that situation presently. तो आपने ये भी बोला कि ये भी बहुत ट्रू है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है व्हेन यू एंड योर कार्मिक एंड कुछ अच्छा नहीं हो रहा बिकॉज ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे. दैट्स वेरी Yeah. ट्रू एंड आई कैन relate to what you are saying, but how to maintain वो balance ही नहीं आ पाता है और वो कैसे balance किया जाए, if you can put रोशनी on that as well. Okay. Good question. Yes. Thank you, Bhupinder ji. Okay. So I think there is a simple and a complicated answer to it. The simple answer is it will take time because when you really try to be aware of something, क्योंकि consciousness और mind बहुत vast चीज है to bring a certain degree of control. अगर आप character building के point of view से देखेंगे, the schedule of virtues Master Choa has given, we start with something grossest. If you want to control something and bring conscious awareness to it, you have to always start from the grossest. So first thing you can change or bring in your control is your physical actions या physical habits. तो सबसे पहली चीज हम लोग अभी उस पर बात करने ही वाले थे, ऑब्जर्वेशन के टॉपिक पे आने ही वाला है नेक्स्ट में. सो द फर्स्ट स्टेप टू रियलाइज कि आप क्या सही कर रहे हैं, इफ यू आर रियली लिविंग बाय द कॉन्शियस माइंड, कितना देर रह रहे हैं एंड कितना टाइम सबकॉन्शियसली रह रहे हैं, यू हैव टू नोट डाउन योर हैबिट्स, योर डेली रूटीन. So you have to start first with looking, okay, from getting up in the morning, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जो रूटीन चीजें होती है ना, जैसे हैबिट्स होती हैं, दे आर पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस एक्शंस. ब्रश करना, बाथ लेना, ईटिंग योर मील्स. So the moment you start to become aware of those simplest things, you will realize certain things about your nature or about your personality. For example, do you do things in a hurry, या आप चीजें जो है बहुत आराम से करते हैं, you do it too lazily, आप
फोन को कितने बार स्नूज पे डालते हैं सुबह उठते हैं तो. सो ऑल दिस विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट योर सबकॉन्शियस हैबिट्स. किसी भी चीज को ट्रांसेंड करने के लिए फर्स्ट उसको जानना जरूरी है. सो वी वर अबाउट टू कम टू द टॉपिक ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस. सो उस पे जब आएंगे तो और डिटेल में बात करेंगे, बट दैट इज हाउ यू स्टार्ट विद द ग्रॉसेस्ट. देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज जहां आप अपने फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, एंड दैट विल टेक अस टाइम. एंड द लास्ट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर थॉट्स. So if you see the virtue of loving kindness and non-injury, master बोलते हैं your month one should just be observation of your actions. When I started to practice this, so पहला 2-4 दिन तो because consciously कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, I do good things. तो जो मोटे मोटे बड़े बड़े एक्शंस होते हैं ओवरऑल वो हम अच्छे ही करते हैं, कोई खराब नहीं करते हैं. बट और पहला दूसरा दिन आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो आज कुछ भी गलत नहीं किया, या वेयर आई एम ब्रेकिंग द वर्च्यू. बट द मोमेंट यू स्टार्ट टू केयरफुली ऑब्जर्व, देर आर मोमेंट्स इन द डे जब कुछ ऐसा हम करते हैं वेयर वी एक्चुअली ब्रेक द वर्च्यू. माइनर, इट विल बी अ सटल एक्शन, मतलब बहुत लाउड एक्शन नहीं होगा बट सटल एक्शन. या फिर वो एक्शन जो होगा रिवील होता है ओनली इन, या स्टिमुलेट होता है ओनली इन फ्रंट ऑफ सर्टन पीपल. फॉर एग्जांपल यू हैव अ maid or a house help or a staff at the office. Generally you're a very smiling person, that is a physical action. But suddenly for some reason, if you're not aware of it, in your routine you do not give smile to that particular staff in the office, and you don't even notice it. You feel it is normal because you have certain ideas about this person. Yeah, maybe you do not like this person. So with me it has happened in the past connected to certain person, and then I realized, why is this happening to me? Why am I doing this? So पहला चीज है attention और awareness उस चीज के ऊपर में. फिर दूसरा होता है analysis, observation के बाद analysis. Then you go deeper by asking yourself the question, why am I doing this? What is the root of it? And जब आप उसके रूट में जाके उसका आपको आंसर मिलता है, तो that is the process of bringing this stuff on the surface. मतलब जो आपके सबकॉन्शियस में छुपी हुई थी, जो आपके एक्शंस को ड्राइव कर रही थी चीज, now it has come to the surface. Now you can see it clearly, so that over a period of time you can resolve it, maybe in a few days, maybe by forgiveness or realizing, okay, why I was doing this. Maybe इसकी कोई बात मुझे hurt हुई, या इसका कुछ behavior मुझे पसंद नहीं आया, but I was doing this subconsciously. Maybe for example कई बार ऐसा होता है that with some people we are so jolly and we make eye contact with them. When we shake hands, we have a very warm shake hand, or when we hug them, we hug them very warmly. But with some people, we don't even make eye contact when we meet them. It has happened to me many times, and I question myself later on, why am I doing this? When I'm talking to that person, or जब भी उस person से कुछ काम रहता है, why I'm not able to make an eye contact? Why I feel uncomfortable? So जब आप ये क्वेश्चन खुद से करते हैं, then you start to assess it. You get deeper realizations about yourself, and then you can obviously IRFR में उसको क्लीन करके करेक्ट कर सकते हैं, forgiveness कर सकते हैं, and then maybe you can make peace with that person. So it's a process. It takes time. It may take more than an incarnation, but Master says कि अगर आप sincerely करेंगे practice, तो within I think 3 to 5 years, or for most people like us, for within 10 years, इतना हम वो assessment कर लेंगे या इतना awareness develop कर लेंगे कि it will last for an incarnation. तो एटलीस्ट 5 साल से 10 साल का पीरियड आप पकड़ के चलिए. अगर आप सिंसियरली करते हैं, you will know so much about yourself, and you will be able to clean so much of these accumulations that your life will be super transformed. Right?
चलिए, लेट्स क्विकली गो थ्रू few more topics, then हम last few questions लेंगे. ओके, सो क्वेश्चन ये है कि कब आपको पता चलेगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक्ट कर रहे हैं. तो देर आर फ्यू पॉइंटर्स आई वांट टू शेयर. पहला, जब आप बेहोश हुए हैं या आप नैप ले रहे हैं, यू नो यू आर नॉक्ड आउट, आप नींद में हैं, दैट इज व्हेन योर सबकॉन्शियस, यू आर एक्टिंग थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड. जब आप पेन में हैं, व्हेनेवर यू आर इन पेन, whenever you have some form of suffering, in that those moments of suffering, you actually are acting through your subconscious mind. When you are worried, when you are anxious, when you are under some form of fear or hatred, you are acting through your subconscious mind. Then when you do something against your conscience, आप नहीं चाहते थे झूठ बोलना पर आपने बोला, उस मोमेंट पे you are acting under the subconscious mind. Then what else? Under pressure, situations where you are under pressure, when you're committing a crime, when you're depressed, when you are hypnotized, जब आप किसी बदले की आग में होते हैं, when you are revengeful, when you live in vanity, यानी जब आपके अंदर में एक you have this tendency to show off your life, your lifestyle, your riches and so on. So जब आप उस state में होता है, when you are showing off your life, you are under the spell of your subconscious mind. When you are very touchy, हर छोटी बात पे आप भड़क जाते हैं या you take it too much to your heart. Then जब आप किसी डर में या when you see a horrific experience or are in a horrific experience, चाहे वो टीवी पे हो या लाइव हो, जब आप नशे में होते हैं, इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, या also, and this came to me as a surprise also, when you are excited or over excited about something. For example, you heard a news, even if it is a good news, and you are over excited. So that over excitement also makes you act through your subconscious mind. कई बार आपने देखा होगा, like when people are happy, like when people celebrate, they're overexcited. Let's say there's this procession going. Even if it was a religious procession, people nowadays they put very high wattage of this DJ instruments, which they have really deafening sound, and they are really overexcited, jumping, but they don't know the harm they are doing to their body. वो अपने body के ऊपर में, mind के ऊपर में कितना harm create कर रहे हैं. Plus they are affecting so many other people. There are a lot of old age people living in these colonies, और वहां से वो processions लेके जाते हैं. They put the trumpet and वो सब इतना जोर जोर से बजाते हैं. Even though they think they are doing this for God, yeah, they are doing it joyously, they are creating a lot of damage to the creating sound pollution. So that is another example that they are not aware of their actions, especially in जो भी ऐसे डीजे या आरजे के शोज होते हैं या सिंगर्स के शोज होते हैं, कितना लाउड म्यूजिक होता है. अगर आप सही में कॉन्शियसली अवेयर होंगे ना, and if you become aware of the effect of that sound on your body, you will never go to these places. So it means that people are asleep in these sessions. That's why they follow this in masses. Is this clear? So these are some of the examples I gave you, like when you're passed out, when you're in pain, when you're worried, anxious, hateful, जब आपने कोई गलती की या आपने अपने कॉन्शियस के अगेंस्ट में कुछ किया, when you're under pressure, committing a crime, depression, hypnotized, revengeful, in all this situation, and when you're overexcited, you are under the spell of your subconscious mind. आप as a soul act नहीं कर रहे होते हैं. Okay, next मतलब next topic के तरफ आगे बढ़ते हैं. Now we'll see what are the different accumulations of your subconscious mind.
आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या अक्यूमुलेट होता है। उससे पहले जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी देर आर सो मेनी थिंग्स स्टोर्ड कि वो ओवर बर्डन हो गया है, एंड देर इज सो मच स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, what happens it becomes starts to become more powerful than you living as a conscious person. वो आपके लाइफ को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। इट मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड blocks your conscious decisions. It takes over your life. It blocks any good materializations or manifestation. It resists. तो आपको लगता है कि अभी मैंने यही करना चाहिए, यानी नेगेटिव एक्सपीरियंस whenever you give up, whenever you fail, whenever you are embarrassed, या आपको जब भी ऐसे एक्सपीरियंस होता है, you will see this is happening frequently, and whenever you try to uh, change yourself, whenever you try to push yourself to become a better person, you feel a lot of resistance. So ये जो resistance आता है, जैसे for example I'll share my experience. I loved to have a hobby and still have it, to sing, or learn to play musical instruments. And since my childhood, I used to have this problem of low self-esteem. Okay. Or thinking that I'm not a very handsome guy, or I do not have the kind of body which people have, or I don't look that smart. My voice is not as good as some of the people who sing well. तो ये सारे मेरे mental accumulations होने की वजह से there were opportunities in life when I was a teenager, where I had the opportunity to sing, participate in a singing competition, और there is a group जहाँ लोग अपना talent perform कर रहे हैं, and I had the opportunity to show my talent. Something within me would stop me. Something would within me would not allow me to participate also. I was a very introvert person before pranic healing. So a lot of my expression was blocked. Now I'm realizing after so many years that this is because of the subconscious accumulations I had. मेरी पर्सनालिटी के बारे में जो भी beliefs and programmings I have created, they was the one who stopped me from acting or expressing myself. Obviously, I've changed it. Later on, I learned to sing in front of people, obviously in a group where I was not judged, because maybe the fear was that I will be judged negatively. So that was the one which was blocking my ability to express myself in many ways. So now that I've learned it, I'm working on it, and it has tremendously changed now. Okay, so remember that if in your life, whenever you feel like you're stuck somewhere, you're trying to get out of it, and जितना आप कोशिश करते हैं, you feel defeated. It is the subconscious. It means that your subconscious mind is loaded and it is stopping you. As I told you that many of the times it is not your negative karma, but it is just lack of purification. So you have to become aware that, okay, this is the time I need to consciously improve my practices, starting with cleansing of my subconscious mind. तो उसकी जो भी methods हैं उस पर हम लोग कल बात करेंगे. But as a Ratic yogi, you can already do inner reflection and blue triangle. कल उस पर हम लोग और deep में बात करेंगे, and we'll practice also. But and then you will learn one or two more methods to daily practice में अपने subconscious mind को dump करना है, empty करने का जो technique है. The easiest technique which I can tell you for today, जो आप homework as a homework कर सकते हैं, is to start maybe making a note, get a notepad.
अगर आपके फोन में नोट अगर आप करने में कंफर्टेबल है तो वैसा करिए, और राइट डाउन एवरी नाइट, सिट विद योर सेल्फ फॉर 10 to 15 minutes, and recall your entire day. Start with observing your physical actions, और आपको सिर्फ उसको नोट करना है, लेबल नहीं करना है अभी, सिर्फ नोट करना है, लाइक द वे यू ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग, डू यू डू इट इन हरी, या डू यू डू इट आराम से, कंफर्टेबली, प्रॉपरली? व्हेन यू गेट अप, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम, नॉट थॉट बट पहला एक्शन आपका क्या होता है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्शन, डू यू गो टू क्लीन योरसेल्फ, or you look for the newspaper? Do you look for tea first, or you start with your day with maybe saying words of gratitude, या invocation से शुरुआत करते हैं, and then going ahead when you are walking towards your मतलब आपने खुद क्लीन अप किया, आपने कपड़े पहने, तो एक चीज और, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू वियर क्लोथ्स, क्या आप कपड़े कैसे भी कंडीशन में रहेंगे? आप जनरली ऐसा नहीं करते हैं लोग, बट समटाइम्स वी मिक्स एंड मैच, कुछ भी पहन लेते हैं कपड़े. सो डू यू रियली मैच एंड वेयर क्लोथ्स जो आपको अच्छे लगते हैं, या कई बार बिकॉज ऑफ लेजीनेस या प्रॉपरली प्लान करके आपने कपड़े आयन नहीं किए, तो डू यू वेयर एनीथिंग, कुछ भी कंबाइन करके पहन लिया, कोई भी शूज पहन लिया, कोई भी सॉक्स पहन लिया, जस्ट लिटिल थिंग्स. इट इज नॉट टू जज बट टू बी अवेयर कि हम कितना अनकॉन्शियसनेस में जीते हैं. सो ऐसे करते करते जब आप घर से निकलते हैं, तो व्हेन यू गेट इनटू द कार, कि आप दरवाजा जोर से बंद करते हैं, डू इट प्रॉपरली. जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो आप बीच बीच में डू यू नो प्रेस द पैडल, एक्सेलरेट, मतलब जैसे कई बार मैंने देखा है लोगों को, थोड़ा थोड़ा देर में व्हेन दे गो टू देयर सबकॉन्शियस माइंड, उनकी गाड़ियां स्लो हो जाती है, फिर एकदम से दे विल एक्सेलरेट, फिर एकदम से स्लो हो जाती है, फिर एकदम से एक्सेलरेट. सो ऐसे वो दे कीप एक्सेलरेटिंग द व्हीकल, एक स्पीड में नहीं चलती है. दैट इज अनदर साइन कि वो कुछ तो भी दे आर एक्टिंग थ्रू देयर सबकॉन्शियस. सो यू ऑल यू हैव टू डू इज कि सुबह से लेके रात तक जो भी आपके एक्शंस है, जो आपको लगता है कि मे हैव बीन गाइडेड बाय द सबकॉन्शियस, क्योंकि उस मोमेंट्स पे आप अवेयर नहीं थे आप जो कर रहे हैं उसका, एंड यू रियलाइज कि हाँ इससे बेटर हो सकता था, नोट इट डाउन, ट्राई दिस. यू विल बी सरप्राइज टू फाइंड मेनी सच मोमेंट्स. जैसे मैंने बोला ना कि यू विल मीट 5-10 बट उसमें से कुछ ऐसे रहेंगे जिनके साथ आपने बहुत अच्छे से बात की, बट कुछ को आपने स्माइल तक नहीं दिया. किसी से हाथ मिलाया तो यू रिगरसली, यू मेड आई कांटेक्ट, प्रॉपरली मिलाया, यू हैड अ गुड चैट, बट विद सम पीपल यू डिड नॉट. अभी इससे डीप असेसमेंट में नहीं जाना है, बट जस्ट कीप नोटिसिंग दिस थिंग्स. उसको आप नोटिस में लाइए, उसको लिखिए. बाद में जब हम कल पूरा प्रोसेस सीख लेंगे, देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग, एसेसिंग द व्हाई बिहाइंड इट. तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में आपको और बहुत सारी चीजें पता चलेगी, जिससे पता चलेगा कि आप कितना परसेंट सबकॉन्शियसली जी रहे हैं, कितना परसेंट कॉन्शियसली जी रहे हैं. बिकॉज विदाउट दिस फर्स्ट डिस्कवरी, आगे की जर्नी में जाने का कोई पॉइंट नहीं. एंड एज आई सेड, वी स्टार्ट विद द ग्रॉसेस्ट. उसमें फर्स्ट हम चेंजेस लाते हैं, देन वी गो टू द सटल वन. ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट 8. आई एम जस्ट लुकिंग, सर कुछ और पॉइंट्स भी है, बट बिफोर वी गो देयर, आई विल जस्ट क्विकली शेयर विथ यू कि जो हमारे सबकॉन्शियस एक्शंस है वो किस चीज से गवर्न होते हैं. सो मोस्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस एक्शंस आर गवर्न बाय दिस. You can note it down also, but you will have the recordings anyway. So most of our subconscious actions are governed by these factors: fear, anger, hatred, jealousy, revenge, slander, malice. Slander मतलब bad mouthing करना या gossiping करना, you know. मलीस का एक मीनिंग ये भी होता है दैट व्हेन अदर पीपल सफर, यू विल टेक जॉय इन इट.
आपको जब दूसरों के साथ गलत होता है तो उसमें मजा आता है, यू से कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, दैट इज अ साइन ऑफ मलीस। देन सो यू हैव टू नोटिस, ये जब नोटिस में हमारे आने लगते हैं तब पता चलता है। देन ट्रीजन या धोखाधड़ी, वैनिटी या और शोइंग ऑफ, हैबिट्स, मैंने बताया ना, मोस्ट ऑफ आवर हैबिट्स आर सबकॉन्शियस। देन ग्रीड, सेल्फ इंटरेस्ट, जब हम ज्यादा से ज्यादा चीजें सेल्फ इंटरेस्ट की कर रहे होते हैं, वी आर लिविंग अ सबकॉन्शियस लाइफ। सुपीरियोरिटी का जब हमें हमारे अंदर में फीलिंग होता है, व्हेन वी कीप इमेजिनिंग नेगेटिव हैपनिंग्स, नेगेटिव सिनेरियोज, खुद के लिए दूसरों के लिए, वी आर अंडर द स्पेल ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। जब हमारे अंदर में अनरीजनेबली या कभी ऐसे सेक्सुअल अर्जेस आने लगते हैं, वी आर अंडर द स्पेल ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। एंड देन subliminal recordings। सो आपने देखा होगा कई बार जब आप ऐसे शांत बैठे हुए हैं तो कोई चीज आपको गाना याद आ जाएगा आउट ऑफ नोवेयर, कोई पुरानी पिक्चर की स्टोरी याद आ जाएगी, या फिर कोई कॉन्वर्सेशन याद आ जाएगा। दिस आर ऑल सब्लिमिनल रिकॉर्डिंग्स। भले ही उस कॉन्वर्सेशन में आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, आप वहां थे और दो लोग बात कर रहे थे और आपने उसको सुन के उसको रजिस्टर किया, नाउ इट came to your mind। So all this, या इससे जुड़े जो भी हमारे फिजिकल एक्शंस होते हैं, they are governed by the subconscious mind। So जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे कल के सेशन में या इस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या ये फैक्टर्स हमारे लाइफ को गवर्न करते हैं। These are just some of the few factors, इसके अलावा और भी बहुत है, but these are the main factors जो हमारे सबकॉन्शियस एक्शंस को गवर्न करते हैं। और ये सारे फैक्टर्स दे लीड अस टू generate negative karma and unnecessary bring more bad experiences or misfortune in our life। So if we can learn to live consciously, we will be able to eliminate a lot of these things from our life and we'll have a much happier life। Now, this particular nurturing will help you improve your practice of inner reflection and firm resolution। उसका importance आपको कल और deep में समझेगा, and then you will all be motivated to practice it every day. You will not skip it। Okay, so maybe at this point we will stop the discussion। Let's take one or two questions and we will continue the discussion tomorrow। And कल उसमें हम practices भी करेंगे। Yes, Sonia, can you unmute yourself? Yeah, hi sir, Atma Namaste. Namaste. Actually, I don't have any question right now because I've joined from the middle of the session. I was like busy out. So, yeah, if anything, like I can ask, can I ask you later on as well? Yeah, sure. Because you raised your hand, that's why I asked you. Yeah, so yeah, and tomorrow again, I will be joining. I might join bit little later in the session because I do have work. So I'll go through the recordings again. And if there are any questions, I'll ask you that point. Yeah. But questions will be answered during the session, right? Yeah, like Maybe जब we will be doing practice session will start, the जो भी आप सीखेंगे, I thought that at least for 7 days from my end, we will do a practice from the 11th of Feb to 11 to 17th of Feb, 7 days का हम एक प्रैक्टिस रखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा आई एम बिजी, सो तब तक आप रिकॉर्डिंग देख के उसमें से यू कैन जस्ट do the practice on your own, and if you have any questions you can later on ask, but till then from the 11th of Feb we will do these practices as a group, and उसके पहले हो सकता है we'll have one more session like this so that more people can join the session। Yes, Shirisha, can you? Yes, Atma Namaste। So, in one point you are saying, right? So the throat and below it is connected to the lower body, and ashna and above it is connected to the higher body, It is right? connected to I your mean, conscious awareness. yeah. So then, what is about is the throat? Can we consider it as a bridge between these two? It is the bridge. It is the bridge from between
the subconscious and the conscious. Okay, that is why we store a lot of emotions in the throat. Is it? It might be the reason. Throat is a bridge, like it has both positive and negative both. It, you know, it has accumulations from the unconscious also. Means your thinking, your concrete thinking or the throat is affected a lot of times by your unconscious accumulations, but especially when you start to become more aware, Mhm. this particular throat becomes, you know, useful for the soul also. So at this moment we are in like in the middle, we are in a dilemma, or we are living a conflicting life. So that's why they say the life of the disciple is a life of conflict. Mm, 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 It's like a Kurukshetra. So we mm. are in the middle of the battle. Okay. Okay. Yes. And one more point you mentioned, right, sir? Like we are in physical plane, there are 7 layers, and we are at the fourth layer, in our consciousness. So how it is signifies our maybe our intellectual capabilities, or maybe our understanding towards the world. Is there So any such thing? Is there? yes, it's a little vast subject to explain, or I mean, there's no one line answer for it. But in my understanding, the fourth subplane is connected to um, being able to understand the things we understand these days, you know, little bit about the technology, little bit about the art, the science, the mathematics, whatever education we are going through, where we are not making any personal breakthroughs or innovations, but we can understand science and technology, where we can understand a little bit about the art, we can understand a little bit about the human behavior, like if you are done some study in psychoanalysis and so on, that is connected to your fourth subplane. Okay. Most people, they are functioning from the fourth subplane. So in my understanding, whatever logical reasoning we use, you know, whatever like chartered accountants, the doctors, whatever study we do and we are able to do easily without much need of understanding, especially abstract subjects, like pranic healing requires you to transcend your consciousness beyond your throat. It requires the use of ajna, forehead, and crown. And then there are some subjects also. But most of the information in the world which we ordinary person is capable of accessing and understanding, because we're talking about masses, right? So if you think of any ordinary person, if you communicate to them, the basics of everything which they can understand is connected to the fourth subplane. Okay. And what will be the fifth, sixth, seventh subplanes? Those are So higher levels. is connected. Fifth is where your soul is, or the chakra is located, right? So fifth has a substantial amount of transformation, a lot of ideas connected to innovations, technology, futuristic, you know, development in any field. It's not just connected to one field. In every field, anything connected to the next maybe 100 years or 500 years. So that information is available in the fifth subplane. Now this, the third subplane. The second and the first are connected to the higher spiritual values, towards connected to the virtues, and also connected to I mean, I have limited information about it, but it's mainly connected to the, maybe in the next in the next session we can discuss this much more easy. I can answer this to you, but as I told you that my information is limited about the second and the first subplane. As humanity, you know, if we all can have a conscious awareness about the fifth, the fourth, or sorry, the third subplane, we have really made progress, because that is where we start to tap the potentials and powers of the soul, the incarnated soul.
Second and Okay. first, we have not yet reached there. I have read about it many years ago. I was trying to recall, but I cannot remember. I need to just recheck my notes. That's why I'm Okay. not answering your question now, but maybe tomorrow. Yeah. Thank you so much. Thank Yes. you. Any other question? I hope we have. I mean, we started with a little slow pace and creating a sorry, certain foundation of this discussion. So I hope it was easily understandable for all of you. The examples we have given from pranic healing point of view. See, the goal is not to know everything about the subconscious mind, because 4 hours is too less time to study this subject. But at least if this session helps you, it shakes you up, makes you question your life, and inspires you to observe, become an observant person, and then slowly bring changes within your, you know, life by cleaning your subconscious mind, living as a soul, then we have fulfilled the objective of this program. So let's give thanks, shall we? Put your hands together on your heart. Raise them high above to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to all the great spiritual teachers and saints, avatars, prophets, messiahs, to my spiritual teacher, Master Chokoksi, Mahaguruji Mailing. Thank you for your priceless blessings. Thank you. Crown with gratitude, Ajna with respect, heart with love. Thank you in full faith. So remember your homework, take a notepad or your phone, and before you sleep for 15-20 minutes, just recall your entire day and just observe your actions from morning to night. And note down the things which you find strange about your behavior, physical behavior. Do not go too much deep into your thoughts and feelings, because that will make you too much confusing. Uh, it will be too overwhelming for you. So just start with something simple, something which you can observe. Because even if you have access to so much information about your personality, but you are not able to change even one thing, it's a waste of your efforts. So it's better to start with something where you can really note and make changes. So today's goal is just observe, note down, and maybe एक दो चीजें अगर कुछ ऐसी है जो you would like to share in the group and which you found strange about your behavior, we will take one or two such feedbacks tomorrow. So thank you so much everyone. Namaste. See you tomorrow. Good night.